Hello everyone, welcome to our channel Geo for Geography and myself Akshay Guru. So guys, I'm here again with the continuation of world mapping. See, from the various examination perspective, you will find this world mapping is really important. And this book, as already we had a discussion on, कि इस बुक का रिव्यू और इस बुक में जो कंटेंट है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे. लाइक दिस बुक इटसेल्फ विद द नेम प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी. प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, this book written by Tim Marshall, and in the very first video of this, because I am going to start the very first series of this world mapping by means of this book, right? So in the last video I had already explained you how this book written in 2015 is a kind of a predictor of the future phenomena as well. Future phenomena, iska naam hai Prisoners of Geography, but I sometimes like rightly consider it as like a future of geography, right? Like the future of the world itself that already been predicted. Q, क्योंकि geographical factors according to the Tim Marshall are at the very root of our civilization, are at the root of what decision we usually text in, like what decision Mr. Putin has taken, what decision Mr. Biden has taken, or Israel-Palestine war, or like any other conditions, right? In future those will arrive. तो ये conditions होगी somehow taking in consideration the geographical factor कि India China war क्यों हुआ, India Pakistan partition कैसे हुआ, and all these reasons, okay, development America superpower क्यों है, सारा कुछ conditions you will find, okay, are already like being discussed over here. Now what in the first session of this first video of this I have already discussed कि इसका इंट्रोडक्शन किस वे में किया है. वहां से मुझे लगता है कि आपको ना इस बुक के लिए जो इंफॉर्मेशन जो अंडरस्टैंडिंग आएगी वो क्लियर कट आएगी. अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस बुक, राइट, जिसके थ्रू हम वर्ल्ड मैपिंग समझना स्टार्ट करेंगे. रशिया एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप एज वेल, उसके सराउंडिंग जो यूएसएसआर था, इन सारे की बाउंड्रीज, रीजन्स, कंट्रीज एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड आर बीइंग डिस्कस्ड ओवर देयर. नाउ so without wasting much of your time, what I shall start now the रशिया वाला पार्ट. See guys, I am now trying my best कि आपको मैं वो चीज एक बेटर वे में दे सकूं. So now if you really find it कि ये interesting होगा तो don't forget to let me know, right? So just please do comment in the video. If you really like this video further onward, to share it with your near and dear one as well, तो उनको भी इस चीज की एक help हो जाएगी. ठीक है? So चलो starting with the first, Russia. See, Russia, vaster and vastest of very great area or extent or immense that it means. So what author has used this Russia as like in terms of very vast country, because see he has as well attached the reason for this. Russia is vast, it is the vastest, immense, it is a 6 million square miles vast, 11 time zones, and it is the largest country in the world. It almost occupies 1/10 of the overall continental area on the earth's surface. तो यहां से देखो, आप देखोगे कि इसका मीनिंग ही समझ आ रहा है कि रशिया इज रियली इमेंस, इट इज हाईली इमेंस इफ यू कंसीडर द ओवरऑल केस ऑफ रशिया. देखो ये पूरा यूरोप से लेकर तो ये नॉर्थ अमेरिका तक, राइट, हाफ ऑफ द स्ट्रेच यू विल फाइंड इज लाइंग विद द रशिया. अब इसके प्रॉब्लम्स भी है और इसके प्रोस्पेक्ट्स भी है, सो विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर ओनली. सी नाउ its forest, further information about the Russia geographical mapping and location. Its forest, lakes, rivers, frozen tundra, steppe, taiga and mountains are all vast. In a sense, देखो हर किसी type of climatic conditions you will find over in the Russia, and all they are having a vast reach and extent. This size has long seeped into our collective conscious. Wherever we are, there is Russia. See, right, what is Russia? Wherever we are, there is Russia. Maybe direct or maybe in indirect way, कि इसके satellite state के through होगा या तो इसके connection के through होगा, है ना, connection in a sense geopolitical relations के through होगा, या maybe having some indirect influence over on this, perhaps to our east or west, to our north or south, but there is Russian bear. Yeah,
सो रशियन बियर इज व्हाट अ सिंबल ऑफ रशिया इटसेल्फ. जैसे इंडिया को हम एलिफेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, चाइना को हम ड्रैगन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. द सेम गोज विथ द रशिया, वेयर द beer, Russian beer is of immense size and it truly represents the symbol of Russia itself. There it sits, sometimes hibernating. Hibernating you must be aware about. अगर पता है तो please let me know in the comment box. Sometimes growling, majestic but ferocious. Beer is a Russian word. But the Russians are also wary of calling this animal by its name, fearful of conjuring up with its darker side, क्योंकि anyway it is highly like attacking animal as well. तो उसी वजह से इसका एक fear भी है, and that's why they called it as a medved. Yeah, medved. That means the honey, the one who likes honey. So this USSR, you will find it has its stretch all across the world itself, India, China and everything else. Now if you consider the boundaries of Russia, so like यहाँ पे line दी है कि 1,20,000 plus medveds are there, Russian beer. However, in terms of the boundary, to the west of this vast country, there is like the Ural mountain. राइट देखो ये है यूराल माउंटेन रेंज. दिस इज व्हाट है यूराल माउंटेन रेंज. नॉर्थ साउथ एक्सटेंडिंग माउंटेन चेन है, फोल्ड माउंटेन चेन है, एंड यूनिक एज वेल ऑन दिस काउंट. स्ट्रेच इसका ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर्स होगा एंड इट इज वन ऑफ द यूनिक ऑन दिस काउंट. यहाँ पे एक फर्दर स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कौन सा सिटी है या पॉइंट है जो ईस्ट और वेस्ट या एशिया और यूरोप को सेपरेट कर रहा है. दैट इज एज वेल गिवन ओवर देयर. सो वेस्ट ऑफ दिस इज वेस्ट यूरोप एंड दिस इज वन ऑफ द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द world, and this part that is Asia is what the Asian Russia. ठीक है, साइबेरिया जिसको हम बोलेंगे, तो साइबेरिया is what this particular part of this. रशिया का stretch you will find is almost up to this particular margin. See how vast this country is with the 11 time zones. Now even in the 21st century, to cross it by train tickets, it takes 6 days. Yeah, even nowadays Trans-Siberian Railways is there. इसको क्रॉस करने के लिए can you imagine 6 days are required. कहाँ पर, मतलब इस वाले पार्ट से ये इस वाले पार्ट तक जाने के, फार ईस्ट जिसको बोलते हैं रशिया में, इस एरिया को फार ईस्ट बोला जाता है. ठीक है, फार ईस्ट, व्लादिवोस्टॉक, यह इसका एक रीजन है जहाँ पे कोरियन पेनिसुला और जापान वगैरह को ये ओपन होगा. So this are what the extents of Russia. बाकी one of the Asia's largest river जो वोल्गा river है, it flows through the Russia itself. यहाँ पे बाकी सेंट पीटर्सबर्ग ये इसका है, मॉस्को is anyway the capital. Eastern frontier है, लेक बाइकाल, one of the largest lake in the Asia, ये भी यहीं पर है. ये पार्ट देखो फार ईस्ट वाला इसका पार्ट आ गया. Then Russia on this count is again having a border with the Sea of Okhotsk, Bering Sea, right? देखो Bering Sea separates North America and Russia, right? Bering Strait is there जो कि separate कर रहा है North America और रशिया को, या यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, सॉरी एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, राइट. फिर यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक एक यहाँ पे एक पोर्ट है जो रशिया के एरियाज में है. बाकी फिर देखो किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बॉर्डर कौन से कंट्रीज के साथ है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन जो करंट अफेयर्स में है, मोल्डोवा, बेलारूस, लुथियानिया, लाटविया एंड Estonia. Then in the north further anti-clockwise में देखो बेरेंट सी इज देयर, और बाकी फिर स्ट्रेच ऑफ दिस रशियन पार्ट. आई होप ये जो एक्सटेंट है ऑफ दिस लैंड है ना, यू गाइज आर व्हाट हैविंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट एज वेल. ठीक है, तो एक बार इसको मैं आपको रेगुलर देखते रहना है, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इसको एक विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपको बता दूं. नाउ हाउ बिग इज दिस बिगेस्ट कंट्री? Yes, how big is the world's biggest country? You know, Russia is twice than the size of the US or China. It is 5 times the size of India, है ना, twice the size of US or China, 5 times the size of India and 25 times the size of the UK. Can you imagine? देखो कितना vast है ये territory. However, it has relatively, but इतना होने पर भी population और resource का use balance हो रहा है क्या? Answer is no. However, it has relatively small population, 144 million. It means 14 crores only. देखो इंडिया की जो size 1/5 है of the Russia, इसकी population है 140 billion.
sorry, like 1440 million, sorry, my mistake. सो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हमारी इंडिया की है, एरिया है 1/5, और रशिया का एरिया 5 टाइम्स है, फिर भी पॉपुलेशन इवन लेस 1/10 ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. Fewer people than Nigeria or Pakistan even. Its agriculture growing season, right, information geographical, is short only that summer time जब यहाँ पे होगा तभी summer solstice, and it struggles to adequately distribute what is grown around the 11 time zones that Moscow can govern. Yes, so that is a shocking news. Like in that case कि इतना times है, population इतनी कम है, और growing season यहाँ पे बहुत short है. Now even just to express the vast expanse of this country, former US vice presidential candidate Sarah Palin, right, was mocked when she was reported as saying you can actually see Russia from land here in Alaska, right. अब Alaska कहाँ पर है, right, Alaska देखो यहाँ से ये जो separation हो रहा है रशिया और नॉर्थ अमेरिका का ये जो पार्ट है ये है अलास्का, राइट. इनके बीच से जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन एज वेल, राइट. डेट लाइन दैट इज अ zigzag line that passes through the Pacific Ocean and defines a difference of date as well. So this line, it simply reflects this fact. Then ओके तो देखो इसका मीनिंग समझो कि यूएस से भी रशिया क्लियरली विजिबल है, इतना इनमें डायरेक्ट कनेक्ट है विद दिस बिटवीन दिस टू कंट्रीज एंड हाउ वास्ट इट इज. नाउ लाइक जैसे हमने कल जो वीडियो जो देखा था उस वाले फर्स्ट वीडियो में, वहां पे था उस बुक का स्टार्ट ही यहां से कि व्हाट पुतिन बीइंग ए रिलीजियस मैन ही मस्ट हैव बीन थिंकिंग अबाउट, like कि Putin basically he must have asked God that why didn't you have put some mountains over in the Ukraine. अब देखो पुतिन का कंसर्न क्या है, पुतिन एंड पिज़्ज़ा, राइट. ओवर हियर व्हाट पुतिन एंड पिज़्ज़ा, it simply reflects the shape of this topographical feature. देखो ज्योग्राफी का रोल क्या है. when Vladimir Putin isn't thinking about the God and mountains, he must be thinking about pizza. Yeah, so he must be fond of pizza, you must be thinking for no. See that it is actually a geographical shape जो पिज्जा टाइप है that is surrounding the west of the Russia, and रशिया का मेजर कंसर्न है वेस्ट. यस, रशिया को मतलब जो हर कोई डिसीजन मेकर था रशिया का, रूलर था, उसका मतलब सबसे मेजर कंसर्न था वेस्ट ऑफ रशिया. नाउ पर्टिकुलर द शेप ऑफ द स्लाइस ऑफ पिज्जा, ए वेज शेप, राइट, हाउ इट इज लुक लाइक. सी the thin end of this wedge is Poland. Here the vast North European plain stretching from France to the Urals, which extends to thousands of miles south to the north, forming a natural boundary between Europe and Asia, is only 300 miles wide. Yes, इसकी जो width है यहाँ पे ये 300 miles wide है. It runs from the Baltic Sea in the north to the Carpathian Mountains in the south. The North European plain encompasses all western and northern France, Belgium, the Netherlands, the Germany, and nearly all of Poland. तो क्या है, if you consider, see what this pizza shape is actually looking for, explaining. See, Poland and this particular part is what having this kind of shape. जहां से एंट्री अगर हो गई एनिमी की, you will find Russia and even the Moscow is will be in danger, है ना. तो Russia must be thinking how to control this frontiers of lying on its west. Now see, the Russia is actually the whole of Europe and Asia combined. Actually Russia is the whole of Europe and Asia combined. See, high up in the Urals there is a cross marking the place where Europe stops and Asia starts. जहां पर एक एंड पे आप देखोगे, one end is where you can foot over in the Europe and the another foot is in Asia. This location, when the skies are clear, it is a beautiful spot and you can see through the fir trees of 4 miles toward the east. In winter it is snow covered, as is the Siberian plain you see below you stretching toward the city of this Yekaterinburg. Yekaterinburg. This is what again, a city over in the Ural mountain where you can have
1 foot in Europe and 1 foot in Asia. See, देखो ये सिटी कहां पर है? दिस Yekaterinburg ये है यूराल माउंटेन रेंज में, जहां पे एक साइड यूरोप आ गया, एक साइड आ गया एशिया, एंड दैट इज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस यू गाइस कैन हैव. तो इसीलिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट भी है, राइट? बाकी फिर उसके अदर इंफॉर्मेशन एज वर्ड ऑलरेडी. अब देखो, यू मे हैव ट्रैवल्ड 1000 माइल फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग, the Urals, but you still have another 400 miles to go before, right? So you can see, say रशिया का स्टेज यहां पर है 1500 miles, but from this Yakinsburg or Ural mountain to the far east जो हमने देखा है, you know how much it is? 4500 miles. It means thrice the overall size, thrice the overall area of this region. So that is very, you know, extensive. Russia is not Asian power. Yeah, Russia is not an Asian power. Why? And Russia even don't consider itself an Asian power. The reason being, Russia up to the Urals is European power insofar as it borders the European landmass, but it's not an Asian power despite bordering the Kazakhstan, Mongolia, China and North Korea, and having maritime borders with the several countries including Japan and United States. अब the case is why it is so. Even Russia derives most of its resources from Siberia. साइबेरिया रशिया का एक थंपिंग चेस्ट है, ये इकोनॉमी को ड्राइव करने वाला एक मेजर पॉइंट है दिस साइबेरिया, वेयर इट यू विल फाइंड इट हैज लाइक मेजर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिजर्व्स. रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम एज वेल, वन ऑफ द लार्जेस्ट, राइट? तो वो ये कहां से आता है? ये आता है साइबेरिया से. फिर भी रशिया डोंट कंसिडर इटसेल्फ like an Asian power. Former US vice presidential candidate like mocked when she was reported. Okay, so ये वाला already था रखा है. Now, so whatever its European credential, Russia is not an Asian power for many reasons. Although 75% of its territory is in Asia, 75% territory, 22% of its population lives there, only 22. Majority population lies in European part. Siberia may be Russia's treasure chest. Yeah, treasure chest मतलब यहाँ पे इसके पास बहुत ज़्यादा reserves है, containing the majority of the mineral wealth, oil, gas, but it's harsh land, freezing for months on end, with the vast forests, taiga, poor soil for farming, and the large stretches of swampland makes it difficult to inhabit it. Only 2 railways networks can, trespass the whole of Siberia. The Trans-Siberian and the Baikal-Amur main line. There are few transport routes leading to north to the south, and so no easy way for Russia to project power southward into the modern Mongolia or China. It lacks the manpower and supply lines to do so in Asia, and hence it's not an Asian power, it's rather an European power. I hope ये भी आपको चीजें समझ आ रही होगी वर्ल्ड मैपिंग के रिस्पेक्ट में, जियोपॉलिटिकल कंसर्न में. नाउ अब देखो, रशिया इज इन डेंजर इन अ सेंस बिकॉज व्हाई? See, China may well eventually control the parts of Siberia because anyway it is less inhabited. वहां पे majority land tract जो है वो inhabited है, dispersed type of settlements is there. And China is anyway the major giant in terms of population. अब ये क्या कर रहा है? Is now trying to allow its migration or trying to occupy the territory of Siberia even by means of this migration that way. Han peoples जो है उसको migrate करवाएगा. That is what the usual strategy of China. And then you will find it may capture further the Siberian after some time, or it will get leverage in that particular case. अब अगर इस केस में देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी ऑफ रशिया, व्हाट सिंपली इट मींस कि how the geography or the overall development of Russia as actually historically observed. So Ivan the Terrible, considered as the first Tsar, and he was really brutal. He was really expansionist in mind, जिसने पहले जो रशिया का जो स्मॉल टेरिटरी होगी उसको एस्टेंज किया है. He put into practice the concept of attack as defense, that what both Chinese and Russian they do have in common.
That is, beginning your expansion by consolidating at home and then moving outwards. This led to greatness. Here was a man to give support to the theory that individual can change history. Without his character of both utter ruthlessness and vision, Russian history would be different. So Ivan the Terrible, right, he was the one who actually made this Russian, the beginning of Russian Empire, right. However, in the later phase, this individual, Peter the Great, actually made that expansion, you know, real time and consolidated. In the 18th century, Russia under Peter the Great, who founded the Russian Empire in 1721, and then Empress Catherine the Great looked westward, that Europe and that particular part, expanding the empire to become one of the great parts of Europe, driven chiefly by trade and nationalism. A more secure and powerful Russia was now able to occupy Ukraine and reach the Carpathian Mountains. Now Ukraine तक चला गया था और Carpathian Mountain, the modern day extension. It looks over of most of what we now know as the Baltic states, Lithuania, Latvia, Estonia. Thus, it was protected from any incursion via land that way from the Baltic Sea. So, ये जो छोटा सा area था, it stretched it over up to this margin, not up to this, but up to Ural then. Right? तो this one. Now, देखो ये हिस्ट्री वाला मैप है, कौन से ईयर में, टाइम में कैसे कैसे एक्विजिशंस हुए, एंड दिस एक्विजिशन लेड टू द प्रेजेंट डे मॉडर्न डे रशियन एम्पायर, है ना. तो इसमें हिस्ट्री भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया, मैप का एक्सटेंड भी आ गया. तो आई रियली फाइंड दिस बुक रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने वो सारी चीजें एक्सप्लेन की है, सो दैट यू गाइज विल बी हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड मैपिंग. नाउ व्हेन Soviet Union broke apart in 1989, right? History, First World War, Second World War, you guys must be aware about. It split into 15 countries. Geography had its revenge, yeah, on the ideology of the Soviets, because they tried to neutralize the geography and try to spread the communism say outside the border of geographical limits. And that geography had taken a revenge in 1989, and it led to the 13 different compartmentalizations of the USSR. So, and a more logical picture appeared on the map, one where mountains, rivers, lakes and seas delineate where people live, how they are separated from each other, and thus how they develop different languages and custom. अब इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ ग्रुपिंग्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि जो अब ये जो रशियन और रशियन सैटेलाइट स्टेट जिसको बोलते हैं, राइट, तो ये जब ब्रोक अपार्ट हुए तो उसके बाद अब इसकी 3 ग्रुपिंग्स बन गए आज के मॉडर्न टाइम में, राइट. इससे भी ज्योग्राफी आप समझ रहे हो, मैपिंग समझ रहे हो. द न्यूट्रल कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, राइट. उज्बेकिस्तान, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान surrounding the water body of Caspian Sea and the Aral Sea, are with the fewer reasons to ally themselves with the Russia or the West. This is because all three produce their own energy and are not beholden to either side for their security or trade. When it comes to pro-Russian camp, right, pro-Russian supporter satellite states, then Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Belarus, Armenia, these are all supporter of Russia. And when it comes to pro-Western or opposition to the now Russian camp is what? देखो जब रशिया का डिवीजन हुआ था या यूएसएसआर का बाइफर्केशन हुआ था 1989 में, it was somehow like the Putin, right, Mr. Putin argued that it was claimed that no country will join NATO, right, after the satellite state, among the satellite states no country will join the NATO. However, that promise was not kept, and according to Mr. Putin, the Mikhail Gorbachev, right, he was that particular individual जहाँ पे जिस टाइम में ये USSR का disintegration हुआ था. So according to Mr. Putin, like that was what a huge mistake in the 21st century to disintegrate USSR, right. और आज ही उसी philosophy पे you can see कि फिर आज रशिया चल रहा है just to integrate all those. So pro-Russian camp में आएंगे according to the Warsaw Pact, we'll find Poland, Latvia,
Lithuania, Estonia, Czech, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Albania, and Romania. So you will find almost all these countries are now moving into the footholds, right, or strongholds of the pro-western camp, right. यहाँ पर ये वाला न्यूट्रल कैंप है, ये वाला सपोर्टिव कैंप है रशिया को, और ये जनरली बेलारूस अगर छोड़ दो तो you will find they are rather in support. Georgia, Ukraine, Moldova, now they are looking to join the same thing. Now, but it's incomplete, right? Russia is still geographically incomplete. Kyun? See, because, and there lies the reason for the current conflict as well, because this book has already predicted कि future में ये चीज हो सकती है. It's incomplete. The reason, see, according to the Russian politician, the Vladimir Zhirinovsky, and thus achieve what it never had, a warm water port where the water does not freeze in winter. अब देखो रशिया की इतना बड़ा एम्पायर है, 11 टाइम जोन है, 1/10 ऑफ द ओवर कॉन्टिनेंटल सरफेस है, लार्जेस्ट कंट्री है, इसकी एक अचाइल्स हिल्स है ना, एक अचाइल्स हिल्स है. नाउ अचाइल्स हिल्स मतलब क्या, एक वीक स्पॉट है इसका, क्या रशिया का वीक स्पॉट है, एंड दैट इज व्हाट it is simply does not have any warm water port. देखो रशिया है, अगर इसका एक्सटेंड देखोगे तो रशिया इज लाइक ए टेम्परेट कंट्री, राइट, टेम्परेट कंट्री. तो इसके ऑलमोस्ट इसके सारे जो देखो सी बॉर्डर तो बहुत सारी है रशिया की, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी, बेरेंट सी, कारा सी, लैप्टेव सी, सी ऑफ ओखोस्ट एंड दिस वन. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द रशिया, ऑल दिस ports or harbors are winter frozen harbors ports. कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होगा कि ये अपने आप क्या होगा, विल फाइंड फ्रोजन हो जाएगा. अब इसी वजह से रशिया को चाहिए एक वार्म वाटर पोर्ट. तो रशिया के अगर आप देखोगे, सी, बट इट्स इनकम्प्लीट बिकॉज सी every politician, every ruler was looking for having a warm water port जहां से आप ईयर राउंड ट्रेड और नेविगेशन कर सकते हो, क्योंकि वॉर टाइम में, इमरजेंसी टाइम में, ट्रेडिंग टाइम में वार्म वाटर पोर्ट आपको हेल्प करेगा, राइट. सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विद द रशिया, याद रखना इसको. The ports on the Arctic such as the Murmansk freeze for several months a year. Vladivostok, the largest Russian port on the far east, right, eastern side on the Pacific, is ice locked for about 4 months and is enclosed by the Sea of Japan, which is dominated by the Japanese. This does not just halt the flow of trade, it prevents the Russian fleet from operating as a global power. In addition, waterborne transport is much cheaper than in land or airborne routes. Yeah, and that's why you'll find कि रशिया का ये प्रॉब्लम है. This lack of warm water port, which direct access to the ocean, has always been Russia's Achilles heel, right? Achilles heels है as strategically important to it as the north European plain. West में देखो इसके पास प्रॉब्लम है, पिज़्ज़ा शेप ये जो स्ट्रक्चर है, वेज शेप, राइट. और बाकी पूरे बाउंड्री पे प्रॉब्लम है कि इसके पास वार्म पोर्ट है नहीं, राइट. एंड रशिया इज एट द ग्रेटेस्ट जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज, सेव फ्रॉम बीइंग अ मच वीकर पावर ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल एंड गैस. सिर्फ इसी वजह से ये बचा है, ऑयल एंड गैस इसके पास ये है. नाउ अब व्हाट इंडिया एंड रशिया, यू नो द रशियन विल मतलब कोई होती है ना कि लास्ट विल, इच्छा जैसे, राइट. सो देयर यू विल फाइंड पीटर द ग्रेट इसका एक स्टेटमेंट है, और उसमें क्या बोला है पीटर द ग्रेट ने, देयर यू विल फाइंड कि इंडिया उसके ड्रीम में था, है ना. कैसे, सी, in 1725 the Peter the Great advised his descendants to approach as near as possible to the Constantinople, right, modern day Turkey and India, because this offered them the best resource potential as well. Whoever governs there will be true sovereign of the world. Consequently, excite continental wars not only in Turkey but in Persia, penetrate as far as the Persian Gulf, advance as far as India. This is what the Russian will, and you can then find a connect between, see, the कोल्ड वॉर और जो इंडिया के रिलेशंस थे विद द रशिया. देखो इसका रूट कहीं ना कहीं है दिस विल ऑफ रशिया, पीटर द ग्रेट ने बोला है ना, क्योंकि इंडिया वाज सिंस टाइम इमेमोरियल, यू नो, स्ट्रेटेजिकली सो इंपॉर्टेंट था, और रशिया वाज मच अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट. फिर यू गाइस कैन कनेक्ट विद अफगानिस्तान वॉर क्यों हो रहा है, यू गाइस कैन कनेक्ट विद द सीरिया वॉर क्यों हुआ, ISIS क्राइसिस है, या बाकी जो रशिया के जो लेड इन्वेजन्स है
है ना, ये सारे क्यों है, यू गाइस कैन एब्सोल्युटली कनेक्ट विद इट। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस स्टफ। देखो कितना जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी के मैपिंग के अंडरस्टैंडिंग से। एंड द रीजन फॉर modern day attack is geography, and the reason is geography. For what, for what reason is geography according to the author? You'll find, see, President Putin did not have much of a choice. He had to annex Crimea 2014, है ना, 2014 में, that means Ukraine, which contained not only many Russian speaking Ukrainians but most important the ports of Sevastopol. Sevastopol is a warm water port जिससे Sea of Azov, then Black Sea, then Mediterranean Sea, and then Atlantic, इसको access मिलेगा to the Russia, and that's why he was looking for, like Sevastopol, and ultimately he needed to attack on the Ukraine. Apart from this, one thing, yes, no alternative to Ukraine joining NATO. This is what the statement of the Russian minister, that if Ukraine would join NATO, we are left with no other alternative rather than, to attack on it. क्योंकि Ukraine is Russia's Achilles heels, where you will find कि weak spot है, अगर वहां पे NATO force आ गई मतलब मॉस्को तो within few miles है, and that is what must be leading to sleepless nights to Mr. Putin. Same with the Peter the Great, same with the Ivan the Terrible, और बाकी सारे czars के लिए भी यही problem था with the Russia. Then see, NATO wants a war with the Russia in the next 20 years. This is what the future of prediction, again you will find given equally in the books, कि ऑथर ने या इस बुक में फर्दर फ्यूचर में वॉर होगा ये तो अभी भी प्रेडिक्ट कर रखा है ना। क्यों? क्योंकि द थिंग इज दिस possible issues, energy, because Russia has decided to use its oil, natural gas and energy power as for the political purpose. See, Russia thought in 2021 even that no one in Europe is going to have a sanction on this, even if it attacks Ukraine. The reason being they all are dependent for the purpose of energy, oil and natural gas on the Europe, है ना। वहां पे नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2 का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सारी कुछ चीजें, तो कुछ मिसकैलकुलेशंस हो गए मिस्टर पुतिन से, एंड अल्टीमेटली दे पुट ए काइंड ऑफ सैंक्शन ऑन इट। बट यस, द बुक हैज प्रेडिक्टेड the energy as a political power will be deployed time and again in the coming years by the Russia and every other power, and the concept of ethnic Russians will be used to justify whatever moves Russian make. See, देखो आगे यही reasons होंगे जो ultimately war या conflict के लिए lead करेंगे according to the author, and this is what the चैप्टर ऑफ रशिया। आई होप रशिया के यहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, कौन से सी सराउंडिंग है, सी ऑफ ओखोस्ट है, जापान सी है, ईस्ट चाइना सी है, अराल सी इज देयर, कैस्पियन सी, then Black Sea, then Baltic Sea, Barents Sea, Kara Sea, Laptev Sea, Volga River, Ural Mountain, stretch 4,500 from Siberia का और चाइना का थ्रेट है, and everything, I just tried कि आपको एक पिक्चर मैनर में और एक easy possible way में I just can explain you guys. I hope you all are pretty much clear with this explanation, and yes, this is all about the first unit of Russia. इसके बाद और consecutive videos आएंगे for each of the unit, and I really find this book interesting. इसीलिए मैं इस पे separate world mapping जो हमारे UPSC के लिए भी और बाकी exams के लिए भी equally important होंगे वो बना रहा हूँ, ठीक है। So if you really like this initiative guys, don't forget to comment, don't forget to share, like and subscribe to our channel. Thank you, Geo for Geography.